Hello, this is Vivek from Prime Law in collaboration with Prime Law Classes, and today I'll be explaining you about the essentials and basics of contract drafting through this video. Now, contract as a subject is very vast and very expansive. अगर मैं सारे topics एक वीडियो में cover करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, and this video will become very lengthy. So this video, part 1, will only cover the very basics of the contract. And in the end of the video you will also find sample clauses. आपको sample clauses description में भी दिख जाएंगे, which will in some way give you an idea the language which is used when you're drafting in a valid and attractive contract. You know, the drafting really matters when it comes to contract. Now before we begin, if you like the video, please like button click करें, and I would request you to subscribe this channel. सो इन द फ्यूचर आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट्स पे, क्रिमिनल लॉ पे, बाकी हर टाइप के लॉ पे, पब्लिक लॉ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, आई डू नॉट वांट यू टू मिस इट. सो आई रियली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड लेट्स बिगिन विथ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज टू व्हाट कॉन्ट्रैक्ट इज एंड हाउ द कॉन्ट्रैक्ट फिनोमेना वर्क्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट? अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नथिंग बट अ प्रॉमिस that is enforceable by law and for which a valid and legal consideration is paid or made. Now, why a legal and enforceable contract is needed? Why it is always said that a contract should be enforceable by law? For example, I will explain you with an example. We enter into contracts every day. हम हर रोज़ किसी ना किसी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं. वी डू नॉट इवन नो अबाउट इट बट वी डू. सपोज यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम अ शॉपकीपर. सो व्हेन यू बाय समथिंग फ्रॉम द शॉपकीपर, यू पे फॉर द प्रोडक्ट or for the services you are availing. Now that payment which you do is the consideration for the service or goods that was provided to you by the shopkeeper. Now this contract is nowhere written. आप कहीं लिखते नहीं हैं कि I will pay you this amount, I will pay you that amount for that much of goods. आप कहीं लिखते नहीं हैं. छोटी मोटी सामान हो गए, सब्जी हो गई, स्नैक्स हो गए, you do not get into a written contract, but it is a contract. Why? Because you are paying for something you bought, and the shopkeeper is in obligation to give you that product or service for which you have paid. Now this is an enforceable contract. ये legal है. आप स्नैक्स खरीद रहे हैं, आप सब्जियां खरीद रहे हैं, आप मेडिसिन खरीद रहे हैं, ये लीगल है. नाउ आपके साथ अगर कोई इशू होती है, यू गेट अ डिफेक्टेड प्रोडक्ट, यू गेट एनी डिफेक्टेड सर्विसेज, यू कैन गो टू द कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, एंड यू कैन आस्क द कोर्ट टू गिव यू अ प्रॉपर रेमेडी फॉर इट. आपको कंपनसेशन मिले, सच थिंग्स. बट अगर मैं कल को किसी से ड्रग्स खरीदूँ, psychedelic drugs, not pharmaceutical drugs, drugs that are not used for medicinal purposes per se, but are used just for, you know, enhancing the human character and mood, you can say, in short. Now अगर मैं किसी से drugs खरीदने जाऊँ, and when I buy drugs and I pay him for the drugs, now tomorrow उस drug में या जो भी मैं drug consume कर रहा हूँ, it is not of a good quality or it is not of the quantity I wanted, I drag the person to the consumer court and I ask the judge, my lord, I have been cheated, ये अच्छी क्वालिटी का ड्रग्स नहीं था. तो the judge will put you in jail and the other person too. Why? Because this was not a valid contract, this was not enforceable by law. तो जज आपको रेमेडी तो बिल्कुल नहीं देगा, आपको जेल में डाले ना डाले. He will not give you any remedy because you entered into a contract which is illegal ab initio. Ab initio is a Latin term for the term from beginning. From the very beginning, ये contract valid नहीं था. It was not enforceable by law. So, if you bought it, you entered into a wrong and invalid contract in the very first place. Then you cannot later claim that you received a damaged product or a damaged service. That is completely not allowed. This is what contract is. Now, a very small example of a good contract you can see is between a nation and its citizens. A nation and its citizens are in a social contract. How? The nation promises to provide the citizens of a nation food, clothing, safety, security, road,
फ्री एयर टू ब्रीथ, फ्री पार्क्स टू गो इन, स्विमिंग पूल्स में चले जाओ, पब्लिक टैंक्स में चले जाओ, पब्लिक वाटर पी लो, पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ कर लो, इन रिटर्न ऑफ विच द स्टेट और द गवर्नमेंट आस्क्स यू कि आप अपने बीच में से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स निकालें, वोट करें, who will become the part of the government and they will run. So this is an interchangeable sort of social contract जहाँ पे the state is providing you such things, certain things, housing, clothing, security, in return of what? Elected representatives, people who will be the part of government and who will run the country with income and tax काट के, GST लेके, all those things that come into place. But that is a social contract. So a nation and its citizen are in a social contract. So the very beginning of the contract comes from the nation itself. Then uske baad to we enter into contracts. That is a different thing. Now what are the essentials of a valid contract? What are the main ingredients and materials needed to fulfill, to check, to enter into a valid contract? Invitation and offer, acceptance, consent, consideration, capacity and legality. ये 6 चीज़ें होनी कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूरी हैं. वैसे तो काफ़ी चीज़ें होनी कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूरी हैं, बट द वेरी बेसिक, द वेरी बेड रॉक is these 6 things. These 6 things are very much needed if someone wants to be into a valid contract. So we will start with the explanation of these 6 things in brief. Offer is the proposal made by one party to the other party to execute a contract. Now, invitation to enter into a contract must not be understood to be the offer. There is a distinction between these terms. Invitation and offer के बीच में एक distinction है, and often people, mistake this fact. They take invitation as offer, and offer को invitation समझ लेते हैं. They get confused in these terms, and past में काफ़ी cases इसमें हुए भी थे इस टर्म्स को लेके, इन टर्म्स को लेके. केस लॉस भी हैं काफ़ी, where the party understood the invitation as an offer to a contract, and the Supreme Court and many high courts have often clarified this concept. So the explanation for this goes as in such a way. An invitation is when you gain the other person's attention towards certain goods or services which you wish to sell or provide to that person for a consideration, and for doing so you wish to execute a contract. That is invitation. I'll tell you with an example. आप पेपर में एड्स देखते हैं, co-working spaces के एड, शेयर्स खरीद लो, डिबेंचर्स हो गए, नई कंपनी कोई लॉन्च हुई, कोई नया फर्म लॉन्च हुआ, एनी न्यू शॉप लॉन्च हुई, दे गिव यू पैम्पलेट्स एंड दे मेक एडवर्टीजमेंट्स की ये ऑफर चल रहे हैं, काइंडली कम टू आवर प्लेसेस, वी कैन डिस्कस फर्दर. यू गो टू सच प्लेस, आप किसी भी प्लेस पे गए, तो जब वो जो पेपर में ऐड था वो आपने देखा, आप इंटरेस्टेड हुए उस ऐड को लेके, एंड नाउ यू वांट टू नो मोर, तो आप उसके वर्क प्लेस पे जाने के लिए रेडी हो गए. नाउ दैट इज़ एन इन्विटेशन. दैट एडवर्टाइजमेंट जिसने आपको इंटरेस्ट किया, जिसने आपका अटेंशन लिया अपनी तरफ, दैट वॉज एन इन्विटेशन, एंड यू accepted that invitation by going to the workplace. That was not an offer, that was just an invitation. What is offer? Now अब आप उसके वर्क प्लेस पे चले गए, you are sitting there, the person is explaining कि ऐसे ऐसे products हैं, state quality products है, state of the art technology है, blah 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 blah, and you have to pay this much of amount for this much of quantity or anything as per the amount when you explained. Now when the amount is told to you, you come to know about the product, the specifications, the amount, or the services specifications and amount. That is an offer. The person tells you ये प्रोडक्ट है, आपको हम इतने में दे देंगे, इस वक्त हमारा लॉन्च सेशन चल रहा है, सो वी विल गिव यू a 20% डिस्काउंट. ये सारी बातें, everything of this sort of conversation is offer. The other person is offering you कि आप ये ले लीजिए, हम आपको इतने में दे देंगे. Now if you agree to that conversation and you say कि ठीक है, I will buy for this much money, let's proceed, then you have accepted the offer. उसकी प्रपोजल को आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसने आपको जो ऑफर दिया, that is accepted.
अब कभी कभी होता है द पर्सन हु गिव्स यू ऑफर, उसके ऊपर आप अपना काउंटर ऑफर देते हैं कि नहीं नहीं इतने में तो बहुत महंगा पड़ रहा है, आई विल टेक इट फॉर दिस मच, दैट इज काउंटर ऑफर. But counter offer will not be covered in this topic. I will cover it in other topic, in other videos with other topics. But for understanding, this is invitation and this is offer. Invitation आपको जब आपका attention लिया जाता है for a certain product or service, and when you go to that place and you explained everything, you're told the price and everything, and then you know what it is, what the product and specifications are, that is the offer. And if you accept it, you have accepted the offer. That is the very beginning of the contractual step. Now let's move on to acceptance. What is acceptance? When an offer is made by one party to the other party, then the other party has three choices usually. One is to reject the offer. Second is to counter the offer by making a counter offer. And the third is to accept the offer. Now, we are talking about the basics of contract in this video, so I will only explain the acceptance of offer, and the other topics, as usually I have said, that they will be covered in different videos. So acceptance ही cover होगा इस video में. Now acceptance is when the other party is satisfied and agrees on the offer or proposal made by the first party. Only then the other party is said to have accepted the offer. But ये जो acceptance है, it should flow from free consent. The consent that is made to accept the offer should be free, and it should not have any of the mischievous parts that the contract act covers. अगर आपको कोई चीज़ ऑफ़र हुई है and in that offer आपको बोला गया है कि ये प्रोडक्ट है, आपको इतना इतना पे करना पड़ेगा. अब अगर आपने उसे अपनी कंसेंट से, फ्री कंसेंट से एक्सेप्ट किया, देन इट इज़ अ वैलिड एक्सेप्टेंस. अगर आपका एक्सेप्टेंस ज़बरदस्ती या फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन ये सब करके पाया गया, दैट इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस. मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदने गए और शटर बंद कर दिया गया और आपने कहा कि मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा, मुझे आगे नहीं बढ़ना. तो फर्स्ट पार्टी ने क्या किया, उसने शटर बंद कर दिया, बंदूक निकाली, आपके सर पे रख दी और बोली कि आपको साइन करना पड़ेगा. दैट इज़ नॉट फ्री कंसेंट, एंड दैट एक्सेप्टेंस विल नॉट बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस, बिकॉज वो फोर्सफुली डरा धमका कर लिया गया. दैट इज़ वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो एक्सेप्टेंस शुड बी by free consent. So free consent, आप कोई भी ऑफर अगर एक्सेप्ट करते हैं तो फ्री कंसेंट होनी चाहिए. देयर शुड बी नो मिसचीफ डन टू यू टू मेक यू एक्सेप्ट द ऑफर. नाउ अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री when it is not gained by doing certain things such as fraud, misrepresentation, mistake, coercion, undue influence. ये 5 चीज़ें अगर आप पर नहीं की गई या आपके साथ नहीं ट्राई की गई, और तब आपने अगर एक ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हैं, देन योर एक्सेप्टेंस इज़ वैलिड एंड लीगल. अगर आपके साथ फ्रॉड किया गया, आपको कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए या आपको कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बनाने के लिए आपके साथ फ्रॉड किया गया, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिसरिप्रेजेंट किया गया, जो टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट में हैं और जो रियलिटी में है वो डिफरेंट हैं, मिसरिप्रेजेंट किया गया आपको, या आपके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, जैसे किसी का आपके ऊपर कोई सुपीरियर पावर है और उन्होंने अपनी बात बोल के या आपको डांट फटकार के आपको बोला साइन करिए, या कोएर्शन फोर्सफुली, एंड मिस्टेक, बाय मिस्टेक आपने कुछ और समझा कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स हैं और एक्चुअली टर्म्स कुछ और थे, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वैलिड. ये 5 पॉइंट्स, दीज 5 मिसचीव्स आर कवर्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट में आप इन 5 का डेफिनेशन पाएंगे. नाउ in short, I will tell you what these 5 mischiefs mean. Fraud is when a party plays fraud on the other party. It could be of any ingredient or any action. आपको कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बोला गया, आप जब रियल में वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के हिसाब से वो नहीं थी. आपको कहा गया कि इस फ़ोन की वारंटी 1 साल है, बट वो फ़ोन 5 महीने में ख़राब हो गया और उस फ़ोन को रिपेयर करके आपको
देने के टाइम पे पैसा मांगा, दैट वाज फ्रॉड प्लेड ऑन यू. दैट इज अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ फ्रॉड. मिस रिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ है, रियलिटी में कुछ है, आपको डिफेक्टिव चीज़ अच्छी बता के बेचेगी, दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन. आपको रिप्रेजेंट खराब किया गया, गलत तरीके से किया गया. फोर्स, व्हेन वन पार्टी यूजेस फोर्स ऑन अनदर पार्टी, दैट इज कोअर्शन. आपके ऊपर बंदूक दिखा के, चाकू दिखा के, डरा धमका के, दैट इज कॉल्ड कोअर्शन. अनड्यू इन्फ्लुएंस इज व्हेन अ पर्सन हैज सुपीरियर पावर ओवर यू एंड योर चॉइस मेकिंग और मेकिंग ऑफ ए चॉइस. आपका कोई बड़ा भाई है, यू रिस्पेक्ट योर बिग ब्रदर मोर वेरी मच, सो उसने कह दिया कि नहीं हमें ये ज़मीन बेचनी है या हमें प्रोडक्ट बेचना है या हमको तो कॉन्ट्रैक्ट में जाना है, तुम्हें करना पड़ेगा साइन. दैट इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस. उन्होंने अपनी गलत पावर यूज़ करके आपको फोर्स किया उस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करने के लिए. एंड देन मिस्टेक, आपने कॉन्ट्रैक्ट में रीड कुछ किया, यू अंडरस्टूड इट इन अ डिफरेंट वे which was not the way it was meant to be understood, and then you enter into a contract, that was a mistake, that contract is invalid. Now these 5 points are very elaborative, so on these 5 points I will explain in another video later on. Now moving on to consideration. Consideration is the most essential part of a contract. When you enter into a contract, acceptance, offer, invitation, ये सब एक पार्ट हुए. कंसिडरेशन इटसेल्फ बिकम्स वन होल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अगर एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, एक लीगल कंसिडरेशन नहीं है, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी वैलिड, दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट प्रोसीड फर्दर. व्हाट इज कंसिडरेशन? इन सिंपल लैंग्वेज, इन लेमन टर्म्स, कंसिडरेशन सिंपली मीन्स अ पेमेंट, बी इट इन कैश और काइंड, टू द फर्स्ट पार्टी in return of the services or good or promise provided by that party. आप कंसिडरेशन जो होती है, सपोज आपने कोई सामान लिया, अब उस सामान के बदले आपने कोई पेमेंट की, आपने कोई प्रॉमिस कर दिया. नाउ यू मेड अ कंसिडरेशन जिस पे सामने वाला एक्सेप्ट करता है एंड देन यू गाइज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो कंसिडरेशन इज वेरी एसेंशियल. नाउ विदाउट अ वैलिड एंड लॉफुल कंसिडरेशन देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट. Now why I say lawful? Because anything that is illegal cannot be used as part or full of the consideration. Such as आपने आपके friend के साथ आपने एक agreement किया and you guys entered into a contract where उसने कहा कि I will give you this much of goods. What will you pay for it? Now आपने बोल दिया यार मैं पैसे तो कमाता नहीं हूँ, but हाँ I provide drugs, I'll give you drugs. आप मैं उस services के लिए या goods के लिए मैं आपको drugs दे दूंगा, पे कर दूंगा. एंड ही एक्सेप्टेड इट कि ठीक है चलेगा भाई, लेट्स एंटर इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट. दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज इनवैलिड एब इनिशियो. व्हाई? बिकॉज कंसिडरेशन इलीगल थी. मनी या कोई लीगल काम आपने प्रॉमिस नहीं किया, आपने ड्रग्स दिया. सो व्हेन इट इज इलीगल इट कैन नॉट बी द पार्ट और द होल ऑफ द कंसिडरेशन. व्हाई इज कंसिडरेशन सो एसेंशियल इन अ कॉन्ट्रैक्ट? द रीजन इज बिकॉज इट इज essential because it shows the interest of the other party in the contract. Now अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है then there has to be a vested interest. अगर मैं आपके साथ कोई डील कर रहा हूँ या आप किसी के साथ कोई डील कर रहे हैं, तो आप जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में आ रहे हैं, दोनों का कुछ ना कुछ फ़ायदा है. आप दोनों अपना एक फ़ायदा देख रहे हैं. द अदर पर्सन थिंक्स मैं आपको ये प्रोडक्ट बेच दूँ, आप ये सोच रहे हो. अदर पर्सन थिंक्स कि मैं आपको ये प्रोडक्ट दे के पैसा ले लूँ, आप सोच रहे हो मैं पैसा दे के प्रोडक्ट ले लूँ. सो आप दोनों के पास एक वैलिड पॉइंट है इस कॉन्ट्रैक्ट में आने का, एक वेस्टेड इंटरेस्ट है. इफ देयर इज नो वेस्टेड इंटरेस्ट देन देयर इज नो कंसिडरेशन, एंड व्हेन देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो कंसिडरेशन इज really essential, because when there is no consideration there are high chances that the other party will end up being defrauded. So consideration forms the essential part of the contract. Now let's talk on capacity and legality. What is capacity? Capacity is simply a person's capability, a person's mental and physical and characteristic capability to enter into a contract. Suppose if you are under 18, you cannot enter into a contract, not at least directly, because you do not have the capacity to effectuate the contract, to fulfill the obligations and the terms and terminologies of the contract. So अगर आप under 18 हैं, you have to enter into a contract by or through a valid guardian. उस guardian की भी roles आते हैं contract में, contractual terms में. या तो आप unsound mind के हैं, if you are of an unsound mind,
जो आप कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स नहीं समझ सकते, उससे जुड़ी ऑब्लिगेशंस नहीं समझ सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझ सकते, सो you're not having the capacity to enter into a contract. And when you do not have the capacity to enter into a contract, you cannot enter into a contract. Agar without having the capacity I enter into a contract, that contract is void, invalid, it is illegal, I cannot do that. So a capacity is needed to enter into a contract. Capacity to enter is needed. What is legality? Legality is simple, the enforceability of the contract. The contract must be enforceable by law. I've already given the example of drugs ka contract. You cannot enter into a contract where you're selling drugs and the other person is buying drugs. So the contract must be enforceable. A contract for killing, a contract for murder, या a contract for kidnap, these are invalid contracts because illegal हैं. इनको कंट्री ने इलीगल घोषित किया है, इन्हें इनके ऊपर ऑफेंसेस पेनल्टी सब कुछ होती हैं. सो विच एवर गोज अगेंस्ट द लॉ कैन नॉट फॉर्म the contract or even the part of a contract. So legality and capacity are also essentials when you are entering into a valid contract to make it a binding contract. So these were the essentials of a valid contract, a binding contract. These are the basics of executing a valid contract. A contract is only valid when both the parties understand the same thing in the same sense. अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज ए में कुछ लिखा है, उसका मीनिंग आप कुछ और समझ रहे हैं और सामने वाला कुछ और समझ रहा है. अगर ऐसा हुआ देन दैट कॉन्ट्रैक्ट और दैट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड इधर सीवियर कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट से, या तो फिर अगर वो कोई मटेरियल पार्ट है, कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट बनाता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको खारिज करना पड़ेगा, इनवैलिड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट. बिकॉज सामने वाला भी उसी सेंस में चीज़ों को समझना चाहिए जिस सेंस में आप उन चीज़ों को समझ रहे हैं. बिकॉज अंडरस्टैंडिंग बिकम्स द बेसिस ऑफ ए गुड कॉन्ट्रैक्ट, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. बिकॉज अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है तो फ्यूचर में जाके दोनों पार्टीज़ में कोई ना कोई डिस्प्यूट आ ही जाएगी. और बहुत बार ऐसा होता है, जब भी आप कोई डिस्प्यूट देखते हैं किसी दो कमर्शियल पार्टीज़ के बीच में या किन्हीं दो कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज़ के बीच में, यही होता है कि मैंने तो ऐसा बोला था, आपने ऐसा क्यों समझा. और सामने वाला बोलता है बट मुझको तो लगा था कि इसमें ऐसा लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा था. तो सामने वाला बोलेगा नहीं आप ध्यान से पढ़िए, मैंने ऐसा लिखा था. दैट इज़ वेयर द डिस्प्यूट अराइजेस. उस पार्ट पे द पार्टीज वर नॉट क्लियर ऑन दैट पार्ट, सो अ डिस्प्यूट अरोज. नाउ व्हेन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, द इंटेंशन ऑफ बोथ द पार्टीज should be towards a positive performance and fulfillment of the contractual terms. In the end, I will only say this, that when you are entering into a contract or when both the parties are entering into a contract, तो इन दोनों का आप दोनों का इंटेंशन यही होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स को पॉजिटिवली एंड कम्प्लीटली फुलफिल करें. द अदर पार्टी शुड रिस्पेक्ट योर टर्म्स एंड दे शुड फुलफिल देयर पार्ट. यू शुड डू द सेम वाइस वर्सा, रिस्पेक्ट देयर टर्म्स एंड फुलफिल योर पार्ट. If you're unable to fulfill that part, you will have to explain the other party, maybe in the beginning of the contract or जैसे whatever it arises. Force majeure clauses भी होते हैं. So force majeure तभी होते हैं जब act of God होता है, ऐसा कुछ flood या drought या ऐसा कुछ हो गया. But besides that, if a party becomes incapable of performing a contract, then that contract has to be decided and adjudicated by the court itself. क्योंकि देन यू विल अप्रोच द कोर्ट कि अब तो हमने आधा पार्ट कर दिया, आप बताइए. तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उसमें आ जाता है, उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाता है कि ये पार्ट तो हो गया, अब इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अदर पार्टी करेगी. सो बोथ द पार्टी शुड ओनली फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑलवेज वर्क इन द पॉजिटिव फोर्स while executing the terms of a contract. any ambiguity, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई ऐसा क्लॉज आ जाता है जो इंटरप्रिटेशन में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है. व्हाट इज़ इंटरप्रिटेशन? किसी भी क्लॉज को समझने या उस क्लॉज के इंटेंशन को समझने में प्रॉब्लम होती है, तब इंसान क्या करता है, द क्लॉज और द कॉन्ट्रैक्ट इज मोस्टली ब्रॉट इनटू द कोर्ट. तब कोर्ट उस क्लॉज को पढ़ के उसका इंटरप्रिटेशन करती है, एक राइट इंटरप्रिटेशन करती है कि इसका द मोस्ट क्लोज एंड द मोस्ट गुड एंड पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन यही हो सकता है. अब इसमें ये होगा, एक पार्टी को ये इंटरप्रिटेशन ये मीनिंग या ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी, एक पार्टी को नहीं लगेगी. बट कोर्ट वही करेगा
जो दोनों पार्टीज के लिए अच्छा है, which is good for both the parties and which will end up in the performance of the contract by both the parties. So this is our video about the basics of contract. This was part 1 of the contract. In the upcoming videos मैं और भी चीज़ें contract के बारे में समझाऊंगा, and I will also be posting different sorts of videos on criminal law, public law, constitutional law. So if you like my channel, if you like this video, please press the like button, and guys definitely subscribe to this channel, because if you subscribe it, आने वाले सारे videos आपको notifications के ज़रिए पता चलते रहेंगे, and you won't miss the legal knowledge you will receive from this channel. So goodbye and take care. This is Vivek from Prime Law in collaboration with Prime Law Classes.